गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। सत श्री अकाल, प्रणाम एंड वणकम। आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स में हाउ टू एक्चुएट आईसेट एंड द इनोवेशन ब्रिज। आईसेट क्या है, ये इनोवेशन क्या है, और इस सब कुछ बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन। राजीव, वेलकम टू द शो एंड गुड इवनिंग। Good evening, sir. Thank you so much. A very important aspect Subject. that the issue is कि sign तो बहुत होते हैं. You can sign any number of things, but if you're not able to actualize it, then it's not worth the paper it is फायदा signed क्या है? on. साइन ऑन। और हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो चुका है। सिविल न्यूक्लियर डील हमने साइन किया, कुछ नहीं हुआ। बहुत डील्स होते हैं, वो सिग्नेचर वगैरह हो जाता है, पर वो साकार नहीं होता। तो ये जो मौका, किस तरीके से ये सब साकार करना आज का विषय है, राइट? और लेट मी पुट अ फ्यू थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट so that we are clear about this. अगर सबको याद है, तो few days back I did something about India-US strategic partnership with Reader Arun Sehgal. There we identified what are the prospects and the problems, and ये भी we saw it from the US perspective. And the US people also have a lot of issues कि how to make this happen, कैसे साकार हो सकता है। उनको भी problems है, हमें भी problems है, right? And then, of course, with General Satish Dua, we did how to convert the defense deals into a reality. And in that talk, which I had with General Satish Dua, we had focused more on the Predator deal and the G engine deal, right? And through the FMS case and how to go about it. But today, we'll concentrate on ICET. We'll concentrate on the initiative for critical and emerging technologies and the innovation bridge, right? इसका दो पहलू है। पहले पहलू का हमने बात कर लिया, और ये second thing we'll talk about that. Okay, now the first thing we'll go into is the fact that कल के दिन it was revolution in military affairs. ये इतने disruptive technologies के बाद आज और tomorrow it will all be disruption in military affairs. And this disruption in military affairs you're seeing already in Ukraine. All these technologies are being put to use on the battlefield. So we need to think of technology, and that's what this Indo-US deal is all about. Okay, US and India signed a lot of deals, and इसका जो fact sheet है, US has put it out through the White House, and this is unprecedented. मैंने कभी भी आज तक ये नहीं देखा कि एक फैक्ट शीट आउट हो रहा है, और उसमें क्या क्या है ये है। राजीव, प्लीज गो थ्रू इट। एंड So, what we need to remember is that the ICET was announced between India and US way back in May 2022. correct. And it was only on 31st January 2023 this year that both the NSAs, who are supposed to be the leading this initiative, had their meeting in US, and the next is going to take place in India. And जैसे वो लिस्ट दिया है, इसमें 6 मोटे 6 basic parts they have kept it as, and or rather domains. The first is to strengthen the innovation ecosystem. जैसे वो शुरू में लिखा हुआ है, उसमें रिसर्च एजेंसीज के पार्टनरशिप हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के कोऑर्डिनेशन है, मैकेनिज्म रखेंगे, एआई के लिए भी है, और मोर इन एआई, along with this AI is to achieve a common standard, global standard and benchmark, which is more aligned to democratic values and high performance computing. और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज द कांग्रेस हैज टू क्लियर सच एक्सपोर्ट्स ऑफ हाईटेक एंड सोर्स कोड. अगर आपको हब बनाना है तो दे हैव टू गिव यू द सोर्स कोड. दैट
has to be cleared by the Congress. Next is the defense innovation. आया है कोऑपरेशन, जिसमें बायलैटरल इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन का रोड मैप बनाया है. लाइक जेट इंजन है, म्यूनिशंस है एंड अदर सिस्टम्स. जेट इंजन का तो अभी जब गए थे तो मोदी साहब के साथ, तो दे हैव साइंड द एग्रीमेंट फॉर जीई. A long-term research and development, especially for maritime security and ISR. Now, you can link this to the sale of MQ-9 Predators, because the MRO hub is going to be here, and then it's going to be long-term for the subsequent follow-on, what type of systems are going to come. And they are talking of an innovation bridge India and US defense startups के साथ. Of course, resilient semiconductor supply chain, that is design, manufacturing and fabrication in India's skilled workforce. This will come as part of STEM and beyond. And they are planning to make a joint task force to make India part of the global semiconductor supply chain hub. Part of. You don't become the hub, you will be part of that hub. Then space collaboration has, of course, training of an astronaut to send human in space, commercial service, a new STEM exchange relating to space, bilateral partnership, basically joint working between the civil space and to include space defense. They call it planetary defense in that. STEM talent का है, that is science, technology, engineering, and you have mathematics. Joint research and university partnership. IIT Bombay has got it with one of the universities there. IIT Madras has opened its offshore campus in Zanzibar. And they're looking at close working between the US universities and our universities and the technical universities. Especially it has been mentioned, IITs have especially been mentioned. And of course, next gen telecom, 5G, 6G. India has worked on that open RAN, that is radioactive network, where any person's system can be integrated to work. Otherwise, अभी सब Samsung बनाता है तो वो अपना कोड लेके बनाता है. It is not open with, say, whatever is made by the American system or maybe made by the European system. अपना ये जो कोड बना है, it is open radio access network, so that there is economy of scale. I don't need specifics. With this platform, I can lay out and roll out this, which the Americans have liked it. This is India built, and if I'm not mistaken, it is IIT Madras built. Madras, yeah. And I think it is for this only that the director has, and other activities, other things that he has brought. The director, IIT, has been given the JC Bose Award. So these are the major issues. Along with that, apart from this, next session or maybe after that, they are going to touch on biotechnology, advanced materials, and rare earth for future cooperation. These three they have in the end in one of their reports. One of the reports they have added. This is for future cooperation. They will look at these things. Yeah. So these have a lot of weight and lot of things to do. So you need to be careful how to actualize this and what. यही तो चैलेंज है. ये अगर ये बोलना अच्छा है कि ये सब होगा, कैसे होगा ये देखने वाली बात है. और today is an attempt to see how to make this happen. Okay, and now today आज के दिन we'll concentrate on ICET for defense. That is the defense technology का जो cooperation है. We'll look at that. We'll talk of semiconductors, artificial intelligence, quantum technologies, advanced wireless, space, and launching an innovation bridge that will connect US and Indian defense startups. We're going to talk about all this, how this can happen. Right. Now, if you remember, we had पहले भी हमने बात किया था military technology of this century.
Take them through, Rajiv. I think we should. We have already done like AI, space, CHIPS Act, energy, Microsoft, the data sovereignty, cloud memory. Because when we quantum computing is the next big thing which people say is going to happen. A lot of work is going on, and so here they are keen to have a collaboration with us because they also agree that we do have minds capable of working on these issues. See, we AI had done a whole series. Yeah, we had done a whole series on this series. 3 months back. AI. Now, Yeah, AI and cloud will go together because if you yep. don't have a cloud, you can't work because the kind of data that AI requires to be effective, which we had done earlier, without cloud memory, you cannot have AI. Space is a very important because in the space thing, they have already spoken about defense. Though the term they have used planetary defense, it is actually it is Space. going to be. It's very clear that people are going to militarize space. How to defend yourself in this domain of space, whether it be kinetic threat or a non-kinetic threat. How to protect yourself. That is now going to be spoken about. And you, of course, we have spoken about cyber security, the kind of alternate and green energy that we need in the battlefield to reduce the logistic loads. Semiconductors is a very important thing. uh, People have to understand here that semiconductor is not one, एक सामान डाल दिया वो हर टाइप ऑफ सिस्टम में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है. इट इज स्पेसिफिक टू यूज, किस तरह से Yeah, यूज होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में होता है. yeah. सो अभी जैसे पेपर पढ़ोगे आप 40 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, these are all for specific uses. Also these companies which come there, people get carried away कि अभी ओ Foxconn आ गया तो वो सारे चिप बना देगा. ना जी, नहीं please बनाएगा. remember Foxconn has been specific to your smartphones and other things, so they have that specialization on that aspect. So everything, if I'm going for radio, the actually the chip is your, people will be right कि भाई वो तो सिलिकॉन का है या गैलियम आर्सेनाइड लगा हुआ है या जर्मेनियम का लगा हुआ है, उसी का लेयर्ड फैब्रिकेशन है. दैट इज नॉट द वन. It is the lithography which gives you the actual connections which are going to be placed out there. That connection, once it is made, you cannot change. It is that simple thing है. अगर वो चिप, बड़ा बेसिक बता रहा हूँ, अगर वो चिप ऐड करने के लिए है भाई साहब, आप उसको सब्ट्रैक्ट करने की सर्किट में डाल नहीं सकते, काम नहीं करेगा. Yeah. Simple term. Okay. So Right. this is very important for us to be able to be clear कि हमको क्या क्या मिल सकता है किस तरह से. Okay. And But communication, of course, yeah, we will need it. Yeah. And quantum communication is also coming through quantum computing and additive manufacturing. At the moment, it's a bit expensive, but once it is mass utilized, the costing will be less. And there are certain places where when you want a particular way it is to be made, in a lot of places you will find that additive manufacturing helps you in reducing your logistic tail for that. Yeah. Okay. So these military technologies we had discussed in great detail, and this is what ICET is all about, right? And how to get these, ये कैसे हमारे फौज के अंदर लाना is what we are going to discuss. अभी तक क्या है, हमने सिर्फ स्टेज सेट किया है कि आगे क्या होगा. आज थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है, पर मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. ओके, ये टेक्नोलॉजीज क्या है, ये बैटलफील्ड में कैसे आएंगे? टेक्नोलॉजी तो है. If I may, sir. Yeah, please. We are talking of high altitude because that's where our primary threat lies. Yes. Okay. That we have to be clear. Yeah. जितना जो भी टेक्नोलॉजी आएगा, ये हाई एल्टीट्यूड में काम करना जरूरी है. अगर हाई एल्टीट्यूड में काम नहीं करेगा तो वो टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं है, राइट? आपको हम सिर्फ हर एक जो चीज है चाहिए, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, हमने एक ये टेबल बना लिया. मान लो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए हमें स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें
GIS नेविगेशन वगैरह का टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम्स चाहिए, नाइट विजन सेंसर्स चाहिए, AI चाहिए, मोटे मोटे तौर पर। इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। रीच, रीच यानी रेंज। एक्स्ट्रा रेंज के लिए हमें प्रोपल्शन चाहिए, अनमैन्ड सिस्टम्स और मैन्ड सिस्टम्स चाहिए, कंट्रोल एंड गाइडेंस चाहिए, और कुछ टेक्नोलॉजीज भी चाहिए। उसी तरीके से प्रिसिशन के लिए टर्मिनल्स, गाइडेंस, स्पीकर्स, AI, स्पेस वगैरह वगैरह। हर एक चीज के लिए जो आप देख चाहिए, बैटलफील्ड एनर्जी के लिए देखिए, लास्ट बट 3 में रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, आपको फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स चाहिए, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है इसमें। हमने इसमें एक पूरा घंटे का मिलिट्री टेक्नोलॉजी द सेंचुरी सीरीज में डिस्कस किया है, क्या क्या होता है ये सब। तो हम दो आज दो लेंगे, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी और रीच, और उसके जरिए आपको एक्चुअली बताएंगे किस तरीके से ये टेक्नोलॉजीज हासिल करना है। जो वो दो मॉडल हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल सबके लिए हो सकता है बाद में, मोटे मोटे तौर पर। ओके, I will take the example of this ramjet shell, right? This is a ramjet shell which we are making. Now, at this point of time, we've already proven the technology for this. Let me tell you this. I'll not go into the details of this ramjet shell. Mote taur par, this is how it looks. This is the front portion is the fuse. It's a precision guided system. Generally, in the guns which we are going to fire in Dhanush, today, like firstly, for a Bofors gun, as of now, we have 24 kilometers range. It will go up to 43 kilometers of range. In a Dhanush, the range goes up to 55 kilometers. With a Vajra, it will go to 60 kilometers. And attacks, it will go up to 70 kilometers. That's the kind of range increment you have. Now, how is it happening? What are the technologies in this? And how have we mastered this? Now, if that model is understood, right, the technologies which we are talking here, you can actualize them, right? Yeah, the only thing is whatever technologies we use for this all indigenous. So we have an indigenous model available to us. जो हमारा खुद का टेक्नोलॉजी है वो मॉडल हम आपको बताएंगे। ओके, ये मैंने वो ये लोग बॉक्स में भी बताया, द शेल टेक्नोलॉजीज हैव बीन प्रूवन बाय फायरिंग and our precision guidance, we are in an advanced stage. We have not done it, but we are in right now. ramjet technologies, सिर्फ एक ramjet technologies में फॉर रीच एंड प्रिसिशन, एक्स्ट्रा रेंज एंड प्रिसिशन के लिए हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए? हमें चाहिए propulsion, miniaturization. It is not miniaturized, it is miniaturization. You need miniaturized control and guidance, AI, additive manufacturing and 3D printing, which General Narayan was just talking of. You need titanium technology, you need GIS, right, georeferencing systems, and space technology. These are the technologies which you need to make the ramjet, shell. Precision ramjet. Yeah, precision ramjet. ये नहीं कि कहीं भी फायर कर दो उसको. You need precision. Right. Okay. Now, And what do you need? miniaturization is you need it miniaturization because it's got to be placed in that shell Shell. to guide that shell to the correct place. You can't be having a huge one. It's not a rocket. It's not a rocket. आपको एक आइडिया बता देता हूँ for just to get a scale. Okay, the miniaturized fuse is of this size. बस उतना ही है, थोड़ा राउंड को एक इसको you turn it around, what you get out of that is the miniaturized shell. In that you have to put everything, all these technologies which we are talking of has to come in that little space, and all control guidance, AI, additive manufacturing, titanium technology, GIS, everything has to come in that, and with right. It's a complicated stuff. Okay. Now, how did we develop it? That's the question, right? We started, when we started, we had nothing, zero. And now we have everything. Okay. I'll just explain this loop, and Rajiv, you can just add on wherever you want. So first and foremost, what we did, if you look at the right bottom corner, you said requirement. So we said the requirement is a ramjet projectile. So we did the analysis of the ramjet technologies. What all goes into that?
After that, we did an interaction with all the services, basically army in this case. Then once the requirement was clear to us that what do they want, then we had to go through a cycle of getting the project sanctioned. Okay. Now in this process, you see the purple arrow on the left. We said, okay, we've done the analysis of the technology. We're getting a due process in place. And mind you, we started with no process and we started with no technology. And that is where we are with the ICET. Okay. But the advantage with the ICET is you have the technology, you don't have the process, you don't know where to put the technology or where you want to put and how you want to put. That's what we are explaining. So we did this मेल मिलाप ये जो नीचे वाले में. फिर हमने क्या किया, क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी थे, कहाँ क्या फिट होता है, कोई एक मॉडिफिकेशन करने से कुछ और पैरामीटर बदली हो जाता है, ये डिजाइन करना शुरू किया हमने. और ये डिजाइन करते करते हमने एमटेक और पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिया छोटा छोटा. एक आप एयर फ्लो करो, आप बर्निंग कीजिए, आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा मेटल इस्तेमाल करना कीजिए और उसका क्या टेक्नोलॉजी चाहिए वो कीजिए. राइट, आप कीजिए कि ये किस तरीके इसका स्पिन रेट्स वगैरह वगैरह कैसे कर पाए, ये कीजिए. आप प्रिसिशन के बारे में कीजिए. So we put together a team of about 30-40 MTech and PhD students जिसने रिसर्च किया on multiple technologies in IIT M and K, यानी चेन्नई और मद्रास एंड कानपुर में. Everyone, each had a team and a sub team. For each subject, we had 3-4 people, and for each subject, we had one professor guiding them. And we had a whole lot of reviews, regular reviews. For each stage of design, we did review. Let me tell you, it took us 2 years to come to some kind of a fundamental design. And today that design doesn't exist. Why? In another 2 years, the whole thing changed. So for us to come to that fundamental design, it took us 2 years. And from then to actual firing, it took us another 2 years and the design has changed. And let me also tell you, it took us 2 years to put the first thing through from the analysis to getting the project sanctioned. So now, as of today, we have spent 6 years to realize the technology. वही टाइम लगेगा आईसेट में भी. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि how to put that semiconductor on a gun or a tank or a missile is the thing, right? Okay, then what happened when we had the final design? We started designing, fabrication and testing of prototypes. Prototypes हमने शुरू किया testing in bits and pieces, individual, not together, because there were so many failures and we were all into the unknown. We didn't even know what was happening because such a thing doesn't exist. Okay, and we all did this within the facilities. Then we had to create facilities. Some facilities we never had to carry out our testing. So we created testing facilities. Then over a period of time, we developed the expertise and we developed institutional knowledge over the past 6 years. जब हमने ये institutional knowledge 6 साल में हमने develop किया, फिर जाके अभी हम ये रैमजेट को तो हम साकार कर चुके हैं टेक्नोलॉजी, उसका फायरिंग वगैरह it is in an advanced stage. But we are today in a position to establish a center for ammunition research and development. And we are in a position to run MTech courses in ammunition technology and other technologies. Now this MTechs and all are very important, क्योंकि जब तक इसके ऊपर रिसर्च चलता रहेगा, पढ़ाई नहीं होगा, ना फैकल्टी बढ़ेगी, ना नॉलेज बढ़ेगा आपका. जब वो नॉलेज ये बढ़ेगा, वापस नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रैमजेट में डिजाइन चेंज में काम आएगा ये. और इसके साथ साथ ये रैमजेट और किसी वेपन सिस्टम में या मिसाइल सिस्टम में फिट करने के लिए भी काम आएगा. अगर ये नॉलेज ग्रुप नहीं रहा तो आपका बिल्कुल कुछ नहीं होगा.
सबको ये पता होना चाहिए. This is where Anything that you want to add? STEM, हाँ sir, this हाँ, is where that STEM talent identification, training and all becomes very important. Because in the training part, what I would need to add is when you're doing MTech, the first year is general subject, as what I have learned here in IIT. The second year, he is directly going to do the project what you and I want, and then he is going to deliver to you having built up on what he has done, and then he. So we have to be very clear what is the type of projects we want them to do to take this forward, to achieve forward. success in what we Yeah, are wanting to do through the ICET. तो each yeah. entity that ICET covers, उसको किस तरह से fructify करना है, this is the whole loop, and where you will find that STEM talent is the basis. If you don't have that talent, you won't ये be गया. able to. तो ये पहले 2 ब्लॉक में है, आपको स्टेम टैलेंट की जरूरत है. आपका तीसरा और चौथा ब्लॉक में आपको चाहिए इंजीनियरिंग टैलेंट, रिसर्च टैलेंट एंड प्रोडक्शन टैलेंट. और आपको यही बता दूंगा मैं, जब हमारा डिजाइन थोड़ा साकार होना शुरू हुआ, व्हेन वी वर क्लियर, वी इनकॉर्पोरेटेड दैट फैब्रिकेशन प्रोसेसेस, द इंडस्ट्री आल्सो कम्स इनटू प्ले. ओके, तो जब तक ये इंडस्ट्री भी नहीं हो, ये अगर आप देखिएगा तो इसमें इंडस्ट्री का भी ये है. इनफैक्ट इन दिस ये सेड Innovation bilateral bridge. defense and participation from industry, academia, government, both thing, industry, academia and government to facilitate research and industry collaboration. So we did all this. We have had this experience of going through this loop, and if you do not have this knowledge loop, this ICET will not work. ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि अगर आप सोचते हो, कोई भी सोचता है कि आईसेट यूएसए से आ गया और कल के दिन हमारा वेपन सिस्टम्स में आएगा, नहीं आएगा. ये कम I से just कम add in this या कि भाई ये हम ये नहीं कह रहे हैं, we are not saying that we don't have people available in the technical institutes who have knowledge. Please remember that is generic knowledge. Here we are talking of specific knowledge. स्पेसिफिक नॉलेज. और And that राइट, specific knowledge, unless we push and say clearly, this is what I want, for which this is what I need, and this is the kind of project they have to do to actualize it, it will not work. इट विल नॉट वर्क. ये बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर आप इसके ऊपर सही तरीके से आप नहीं करोगे. अगर आप सोचते हो कि वहां से सेमीकंडक्टर आ गया, आपका हथियार में जाएगा, नहीं जाएगा. ये तो खाब ही खाब रह जाएगा. उसके बाद हम एक दूसरे को गाली दे सकते हैं, Because यूएसए उसके को गाली हथियार दे का सकते हैं, डिजाइन अलग है, हम जो हथियार यूज कर हमारा रहे हैं उसका डिजाइन अलग है. अलग उसने है. जो चिप बनाया था अपने हथियार के लिए बनाया था, आपके हथियार में नहीं होगा. जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास एक बल्ब होल्डर है जो जिसमें आप स्क्रू करके बल्ब डालते हैं, और आपके पास पुराना जो बल्ब होल्डर होता था उसमें छेद होता था, स्टड होता था, स्टड दबा के डालते थे. अब स्क्रू वाला स्टड में जाएगा और स्टड वाला नहीं स्क्रू में जाएगा, जाएगा? नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. बस बड़ा सिंपल है. सिंपल ओके, सा और सिंपल. ये हमें सीखने के लिए, मेरे को खुद पर्सनली 6 साल लगा, और 6 साल का कठिन परिश्रम के बाद मैं जान चुका हूं ये लूप के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे. ओके, ये तो रैमजेट के लिए लूप था. अभी हम बात करेंगे बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी के बारे में, और उसका लूप कैसे बनेगा. राइट, right. Battlefield transparency and maritime domain awareness are almost the same. You need similar technologies and similar configuration, and इसमें ना fusion is the name of the game. Okay, why I've taken this is, I'll go back to that fact sheet. वो fact sheet में है maritime, they spoke of somewhere, Yes, where have maritime they said, security and ISR. ISR, maritime security and ISR is battlefield transparency and मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस. नाउ अगर आप यहाँ जाएंगे तो टेक्नोलॉजीज ये चाहिए आपको चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको जेएस चाहिए, मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम्स चाहिए, क्योंकि उड़ते रहेंगे, यूएवीज उड़ेंगे,
आपके पास सैटेलाइट उड़ेंगे, ये सब यूज करने की जरूरत है। नाइट विजन और स्पेशल सेंसर्स होंगे, वो टेक्नोलॉजी चाहिए होगा आपको। एआई चाहिए होगा, कम्युनिकेशन होगा, साइबर टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि जो भी आप डिटेल ले रहे हो, यू कैन नॉट बी हैक, इट हैज टू बी हैक प्रूफ, राइट? एट टाइम्स यू माइट हैव टू हैक इनटू अदर्स थ्रू दीस सिस्टम्स। यू नीड क्लाउड। बिना क्लाउड के आप भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। और आपका खुद का सेमीकंडक्टर्स चाहिए। आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज। अगर आप वो आईसेट का लिस्ट देखोगे, आईसेट का लिस्ट पूरा इसमें रिप्रेजेंटेटिव है। बिकॉज ऑल द जैसे हार्डवेयर ऑफ एआई बोला है, विदाउट अ क्लाउड यू कांट हैव एन एआई। कैन डू इट। या The moment you ओके। talk of communication and cyber technology, without semiconductors, you cannot have any of those. या And ओके। moment you say ISR, means GIS comes into play. GIS is to act exactly locate where the thing is, वेयर यू आर। where you are ओके। and where whoever is locate करने के लिए. So आई automatically you will get space का भी आ जाता है, and that's why they spoke of space defense by talking as planetary defense. Okay. Now, for this, which it means, the question comes कि भाई नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों एक ही प्रोग्राम बनाएंगे? नहीं, नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टार्ट जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल, सो दैट अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा आ जाएगा। एक में एक टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, एक थॉट प्रोसेस लगा सकते हो, दूसरा में दूसरा थॉट प्रोसेस। इट्स कॉल्ड हेजिंग, so that you guard against failure. Even in technology, you have to hedge. You have to have different models to go through. But ये पूरा इंटरेक्टिव मोड में होना चाहिए. So the first thing is whatever you develop has to be interactive, edge, and too specific to that particular application and task. And you each for this you need a large project. And ये सिर्फ मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, अगर आपको कम्युनिकेशंस चाहिए उसके लिए एक प्रोजेक्ट चाहिए, आपको आपका मोबिलिटी के लिए चाहिए तो अलग प्रोजेक्ट चाहिए होगा, आपको सर्वाइवेबिलिटी के लिए चाहिए ऑन द बैटलफील्ड आपको सेपरेट चाहिए। एनर्जी, आप क्योंकि बैटलफील्ड में कल के दिन एनर्जी की जरूरत होगा, उसके लिए एक सेपरेट चाहिए। बट ये सब वी हैव टू इतने गो सारे थ्रू इतने इट। सारे when we are fielding so many systems, they won't function without energy supply. एनर्जी, या So you ओके। need, तो you have to cater for this increased energy requirement for all these things. या अभी देखिए, ये जो पहले हमने बनाया था मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस सेंचुरी, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक टेक्नोलॉजी इसमें कीमती है, राइट? हर एक टेक्नोलॉजी इसमें कीमती है, हर एक इंटरैक्टिव है। ये टेक्नोलॉजी इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर अगर आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो ये टेक्नोलॉजीज आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते ऑन टू वेपन सिस्टम्स। ओके, मैं वापस वहां जाऊंगा। ओके, जिस तरीके से, या सॉरी, ओके, जिस तरीके से हमने बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए बनाया है, और ये भी देख लिया, इसका भी एक नॉलेज लूप बनेगा। तो राजीव, यू गो थ्रू दिस हाँ, लूप नाउ। so अभी like battlefield awareness है, it is basically a lot of people term it as persistent situational awareness that can be on land, sea, air, कहीं पे भी हो सकता है, मैरिटाइम हो सकता है, एयर स्पेस, लैंड, यू रिक्वायर टू नो, दैट इज व्हाट इज आईएसआर ऑल अबाउट। तो सबसे पहले यू हैव टू ब्रिंग आउट टू टेल कि भी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे सर ने लिस्ट करके दिए थे, डिस्कस विद दी सर्विसेज एंड इंडस्ट्री की भी किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये फिट होता है, कैसे यूज होगा। नाउ यू हैव टू गो टू दी सिविल, इंक्लूड दी एकेडमिया, you need to get your MTechs and PhDs in place who will be able to give you new technologies that they can think of. Remember, सर्विस में भी हमारे पास ट्रेंड बंदे होंगे, you need a fresh mind to give you something different. पता नहीं, somebody may give you something out of the box, Out of the when you're box. doing, out of the box when you're doing it. So don't ever miss out on tapping this academia domain that you have to, and it is a better bang for the buck.
and then from there you get your outcome based research projects and other things which you can give to your these students. एमटेक का जो जैसे मैंने कहा फाइनल ईयर है, पीएचडी वाले कर रहे हैं, एमटेक का ज़्यादा जोर होता है क्योंकि एमटेक अभी फील्ड में घुसा नहीं है, तो उसको आप एक स्पेशलाइजेशन की ओर भेज सकते हो। पीएचडी ऑलवेज की भी एमटेक में क्या किस तरह से स्पेशलाइजेशन किया था, तो वो उसी जगह जा सकता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब नहीं है कि आप पीएचडी लोगे, दे विल बी मेनी फिट्स विल बी अवेलेबल टू यू जो प्रोजेक्ट करने। इस तरह से आप अपना फैकल्टी, अपना इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जैसे ही तैयार कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको आईआईटीज एंड अदर जगह कोर्सेज कंडक्ट करना है, सर्विस के अंदर कोर्सेज कंडक्ट करना है, आप कंडक्ट कर सकते हो। अब इसमें आगे जब आप अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लैब के अंदर कर देते हो कि हाँ ये फंक्शन हो जाएगा, यू नीड टू गेट द आपके सिविल और प्राइवेट इंडस्ट्री और इवन फ्रॉम द पब्लिक आपके इंडस्ट्री है, दे हैव टू नाउ कम एंड कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर टू अचीव द प्रोडक्ट दैट यू आर वांटिंग टू मेक। उनके बगैर, एंड दैट इज वेयर योर स्टार्टअप्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। Where a startup is there, you can kickstart that startup by helping them along with these projects, and they are very keen to work with you. You will have private industry players also very keen to come and work with you. And so once that is done, please remember, every cycle that you go through for various projects, you are increasing the technology base from where you can tap for, because this is what sir had also mentioned, this is an evolving, emerging technology. As systems evolve, you can build up on this technology base to tackle the new evolution that is coming. ये एक साइकिल है, ठीक है ना, ये इनिशियल साइकिल है। आपको स्पेसिफिक फॉर रैमजेट आपको बता दिया। अब ये जेनरिक इसमें आपको जनरल नारायणन ने बताया है। आप इसमें कहीं भी इस साइकिल के अंदर इंडस्ट्री को फिट कर सकते हो, किसी स्टेज में फिट कर सकते हो, और इंडस्ट्री से भी लोग लेके आप ट्रेन कर सकते हो ताकि आपका नॉलेज बढ़े। उसी तरीके से कहीं भी आप स्टार्टअप्स को फिट कर सकते हो, स्टार्टअप्स के जरिए भी रिसर्च कर सकते हो, राइट। और सो यू हैव टू हैव हाईली इंटरेक्टिव सिस्टम। ये हमने जो दिखाया है बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से बताया है, एक्चुअल लाइफ में थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होता है, बट क्योंकि आम लोग देख रहे हैं, आप शायद यू विल नॉट फॉलो, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इन एज इन रियल लाइफ। बट जो हमने रैमजेट के I will just add one thing, like what I learned from you when you discussed about your Ramjet thing. It's not necessary first shot where you will succeed. You will fail. You will have failure, but you will learn from those failures and go forward. So it's a lot of a learning curve that you go through with those failures. It's not necessary. If you'll be very lucky if first shot you go through. Invariably, it doesn't happen. मैं तो उल्टा बोलूंगा, यू विल बी वेरी अनलकी इफ इट गोस थ्रू इन द फर्स्ट शॉट, बिकॉज आपका लर्निंग बिल्कुल जीरो है। और हम फेल कर चुके हैं। होता नहीं है सर, प्रैक्टिकली होता नहीं है। You actually have failures before you succeed. या ये रैमजेट में हमने बहुत फेलियर झेला है, ठीक है ना, खैर वो अलग बात है। बट जो लूप वहां हम सक्सीड हुए हैं टेक्नोलॉजी में, ये जेनरिक लूप ऐसे बनाया है। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक वेपन सिस्टम, हर एक वेपन प्रोसेस, हर एक फील्ड में आपको ये टेक्नोलॉजी लूप बढ़ाना है ताकि ओवरऑल देश के अंदर आपका टेक्नोलॉजी नॉलेज लूप बढ़े। ये तो मैंने एक आईआईटी मद्रास का आपको बताया है, पर हर आईआईटी में ये होने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये सिर्फ आईआईटी नहीं है, अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उसमें भी होना जो हो सकता है, राइट। सो आप ये सबको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टार्टअप्स, राइट। जब ये पिक्चर जो है उसके पीछे जो है, ये आईआईटीएम का रिसर्च पार्क है। ये 10 मंजिल का एक फ्लोर है, 3 बिल्डिंग है,
और इसमें सारे स्टार्टअप्स हैं हमारे। जब पीएम साहब आए थे, पीएम प्राइम मिनिस्टर केम देयर, he said this is the biggest facility for startups in India, just for your information. So other day, for the first time, when General Narayanan joined IITM, I took him here, and I think he should give you his first, what shall I say, impression of this place. Yeah, please. My jaw dropped. The first impression is my jaw dropped. It's amazing that right next door you have a startup wherein your own students who are studying there for projects can reach out to them to help out. These people, if they are doing something, can reach out to the faculty. It's amazing, and the cross pollination that takes place would be amazing in this place. And I was really I felt very nice to see that incubation cell. It's a huge place for idea. I like what big companies, Amazon and all, call ideation room. This is an incubation cell where you are ideating various ideas and discussing and seeing how to take it forward. It's an amazing thing, and it helps IIT Madras. Even especially we are looking at it from the military technology point of view, for the knowledge loop wherever we need help. You can fit this, Anywhere. startup from anywhere. I'll come to that. Okay. So this is the research park. आप देखिए इतने subjects हम, we are doing research on. So many startups are there. I made the thing. I'll let me see if I can show it to you fully. Sir. Uh, yeah, Can read it. you have all these. But the problem at this point of time is defense is missing in any startup. We have just about 3 or 4 defense startups. It's a pity. एंड ये भी 6 साल के बाद जब आईडेक्स आ गया है, 4 साल पहले, एंड आईडेक्स सब बोलते हैं आईडेक्स अच्छा है, बट आई थिंक आईडेक्स इज नॉट इनफ। यहाँ हमें बड़ा सोच की जरूरत है। अगर हम बड़ा सोच के साथ नहीं जा सकते हैं तो आईसेट और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। और मेरे ख्याल में ये एक सुनहरा अवसर है देश के लिए कि ये फॉर ट्रांसफॉर्मिंग from where we are today into the next generation technology in the armed forces. Yeah, So you had I would something to say, say. I would take it further and say that this is like, these agreements are transformational agreements that have been signed, and we need to be very up and about how to actuate them. Like if something similar is there in most of our technology institutes, and We should they are use able them. to create that, then the knowledge loop that we put across, just imagine the kind of knowledge base in the next decade you would have produced within the country and within the three services themselves of for your military technology and all these evolving and disruptive technologies. And then sky's the limit for what you can achieve. There's no doubt about it. Now we have a entrepreneurship ecosystem जिसमें जैसे राजीव ने बोला, ideation is the first stage. Then you have a pre-incubation when that idea comes into some shape. Then you incubate that idea and convert it into a product, and then there is support to take it to the next level. This is the complete civilian model. Okay. Now of course, we have the motto of our IITM incubation cell is bringing unlike minds together. So you're fitting a lot of technologies into the same loop, and that's the way to go forward. Okay. Now, if you look at it from a defense perspective, you have, when you want defense technology, any of these ICET technologies, when you want to convert it in, you have the startup to start with, and that you have to develop an idea based on a core technology with defense application. और ये जो है वो you need to do ideation. इसमें क्या है, armed forces come in. The armed forces and the startups and the academia and even industry have to get together and convert that idea into something so that it gets incubated.
in the incubation stage, you need mentoring and you need practical systems where these chaps can work. And that is where the armed forces come in. Then the academia, and all this partnership, the academia is there, right? Who will convert this entire thing and give it to the industry where it can be scaled up and be taken up. So this cycle is very, very important for all of us. And, uh, so this cycle is going along with the knowledge loop. जो पहले knowledge loop है, ये नॉलेज cycle लूप भी से उसके बंदे यहाँ आते हैं टू बी एबल टू यहाँ आइडिएट एंड टेक इट फॉरवर्ड. ideate and take it forward, right? So these are all, important things. If you have anything else, you can talk, Rajiv. Otherwise, I'll go to the next slide. Because even when we are taking the startup or ideas of fructifying into something practical and you're taking it forward, at some stage you need to bring in your OEMs also, because they would also take a little bit of time to absorb that technology that he is going to utilize. And यही नहीं, ये स्टार्टअप जो है एक सब सिस्टम या सब सिस्टम बनाएगा, ये मेन सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करना है, वो दैट इज द थिंग. और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है विद द OEM, the academia, the service concerned, and the arm of the service concerned. And if needed, you have to get the DRDO and OFB and things like that also, and also the startups. So it is a collaborative effort, and that ecology we have to create today. And right? This is where the agreement gives the Americans can also help you in this knowledge. This, हाँ, ये कुछ लोग यहाँ इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि सर USA will arm twisters वगैरह वगैरह. अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई आर्म ट्विस्ट नहीं होगा. Unless we develop the knowledge loop and unless we become a knowledge based system, आपको लूप आप फिर there's no arm twisting, आपको पूंछ भी मरोड़ा जाएगा अगर ये नहीं होता तो. The knowledge is the only thing which will help you get away from this. Okay, then there is the issue of defense innovation. Now defense innovation में there are 4 types of innovation. एक है technological innovation, applicative innovation, organizational innovation और financial innovation. अगर ये 4 innovation नहीं है तो आपका transformation होगा नहीं. You'd like to explain to them a bit, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो हमने समझा दिया है आपको, जो नॉलेज लूप पर पूरा आता है. वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने के लिए सर्विस को हैज टू बी वेरी क्लियर कि क्या बनवा रहे हो, वो किस तरह से आपके जो सिस्टम आपको चाहिए वो कहाँ फिट होता है. अगर आपको वो एप्लीकेशन नहीं पता है तो आपका पूरा ये लूप फेल हो जाएगा. अच्छा, इसको करने के लिए द होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पुराने थे आपके. नाउ यू हैव टू चेंज टू ब्रिंग इट इनटू दिस लूप. आपके जो डिफेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, हाउ टू, the main aim is how to facilitate this process. It cannot be stuck in a bureaucratic process कि भाई ये 34 steps या 31 steps करके करने. I'm sorry, things won't work because technology doesn't wait for those 34 steps. By the time you have utilized those 34, 37 steps, you suddenly find that what you have cleared is a antiquated technology. So your organizational innovation has to come up. And for that, you need experts in the decision-making process. Without that, it will not happen. Financial innovation. You can't be the way we spend our budget today. It can't work that way. And because the capex expenditure will be there, how are you going to do it? But since you're going to involve the academia and, like we said, even the industry at some stage, the capex investment per service that you want to do may not be that much in the initial stages. It will be there, but it's not necessarily going to be there. But what do you do with the slippage? Are you going to give it every month, every year? Are you going to give it afresh? Because there will be some more projects which have come up. So I had a thought. Please go ahead. Leading economist. Let us say RBI is asked to set up a defense capital expenditure fund, a capex fund. And whatever money is the slippages out here in the capex goes into the capital RBI fund and does not go into the consolidated fund of India.
because then it will get spent in some other department. Now, Yeah. year on year, as that is building up, it is also earning interest because RBI is going to invest it. At a particular point in time down the decade, you might find that your load on capex, especially for committed liabilities for something which you are trying to buy and over a period of 5-6 years you are going to give, this capex fund may be able to take that load because it has generated so much interest and the quantum would have increased. So if at a particular time you want something more, you can take it from this. So at least something is available to balance out your money requirement. If you're going to do Yeah. year on year capex, it's just not going to work. And you can also go to the market and raise money through shares, through, uh, that's what happens outside. So a big industry can raise money out of capital from the market and then fund research. You might fail in 2-3 projects, but in one project you'll succeed and that project will make money. You can go into export. So there are a lot of things आप कर सकते हो. एक बार आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप कुछ भी कर सकते हो. And we have to invest in technology and innovation. Okay, मोटे मोटे तौर पर अगर आप ये देखेंगे तो आईसेट एंड ये जो जी इंजन के लिए है, हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए. जो हम प्रेडेटर एफएमएस रूट के जरिए ले रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए एप्लीकेटिव इनोवेशन, राइट. और ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन और फाइनेंशियल इनोवेशन जैसे जनरल राजीव ने बताया, यू नीड लॉन्ग टर्म गेन्स एंड यू नीड लॉन्ग टर्म विजन फॉर दिस, राइट. योर ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज ट्यून टू दिस न्यू सिस्टम, ये कुछ होगा नहीं. ओके, राइट. ओके, ये 2-4 चीज मैं बताना चाहता हूँ. इंडिया मस्ट बी द ओनली कंट्री विच ट्रेन्स रिसर्चर्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नासा एंड अमेजॉन, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये एक दुर्दशा है हमारा. हमारे जितने ब्रेन है बाकियों के लिए काम करते हैं, हमारे लिए नहीं काम करते हैं. तो जरूरी है कि वी नीड टू डेलीगेट एंड डाइवर्सिफाई रिसर्च फ्रॉम डीआरडीओ टू प्राइवेट इंडस्ट्री एंड एकेडमिया. इसका अनाउंसमेंट भी हो गया 2 साल पहले बजट में, पर इसका गाइडलाइंस आज तक नहीं मिले. रिसर्च डेलीगेशन नहीं हो रहा है. अगर आप अभी नहीं करोगे, ये आईसेट से जितने भी आ रहे कुछ नहीं होगा. ये मैं वादा कर रहा हूं आपको. आप मेरे से अगले साल या 2 साल के बाद दोबारा आके ये प्रोग्राम करूंगा. अगर नहीं हुआ तो ये फेलियर होगा. तब एक दूसरे से उंगली हम देखते रहेंगे कि यूएसए ने नहीं दिया हमें टेक्नोलॉजी. यूएसए ने दिया होगा पर हमें इस्तेमाल करना नहीं आया होगा. ओके, देन ऑफ कोर्स इंक्रीज कैपेक्स, अदरवाइज ऑल डील्स विल बी डेट एक्सपेंडिचर. जैसे अभी राजीव नारायणन ने बड़ा क्लियरली बताया कि एक कैपेक्स फंड होना चाहिए और रोल ओवर फंड होना चाहिए ताकि you can, and you have to think, you have to innovate financially. Okay, next है हमारे लिए एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत है. मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं, ये आप पॉइंट्स जोड़ दीजिए. क्योंकि अभी जो डिफेंस एक्विजिशन बोर्ड है या डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, वो क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, वो मोटा मोटा इट इज अ प्रोसीजरल थिंग वेयर इट हैंडल्स स्टैंडर्ड थिंग जो हमारे किताबों में लिखा है. बट अभी जो होने वाला है सब कुछ नॉन स्टैंडर्ड होने वाला है. सब कुछ नया है. ये एक सिस्टम ही नया है क्योंकि इसमें इंडस्ट्री है, एकेडमिया है और गवर्नमेंट है, सब कुछ है. तो आपको एक एडवाइजरी सिस्टम चाहिए who can navigate all this new things, जिसको पता है इसको कैसे नेविगेट करना है, जिसको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है. इसमें बहुत अड़चन आएंगे. There'll be lot of loops, there will be dead ends, right? उससे कैसे निकलना है? हमारे रूल्स वायलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे रूल्स लिखे हैं. आपको जरूरत है कुछ और करना, उसको सरकमवेंट कैसे करना, ये सब हमें जरूरत है. और उसके बाद वी नीड जॉइंट प्रोक्योरमेंट. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जॉइंट सिस्टम्स चाहिए हमें. ये सब जॉइंट एडवाइजरी बोर्ड हमें लाना जरूरी है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू से इन दिस, राजीव? नहीं सर, वही जैसे जो 34 स्टेप बता रहा था, ये जो इनके प्रोसेस हैं, इफ यू गो थ्रू योर डीपीपी एंड अदर मैनुअल्स, दे विल टेल यू कि इतना लंबा है कि आपका जब तक आपका हम we get our media also gets hyped that the DAC has cleared a project. They don't realize that that is the start point
and there are still almost about 34 to 36 months. If nothing else happens, a lot happens in between, that you're going to get it. That is, it's going to take at least minimum 3 years when if it's a smooth flow. Otherwise you can realize how long it takes. मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जब मैं कर्नल था कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे डीएसी में, ये बार बार हर 2-3 साल के बाद वो दोबारा ये सैंक्शन होते रहते हैं, आज तक सामान नहीं आया। ठीक है ना? तो ये बड़ा गेम जो है ना, नॉलेज का गेम है, और नॉलेज लूप अगर नहीं बढ़ाएंगे, ये नॉलेज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। ओके, लास्ट पॉइंट, ये सब सामान आएगा। The same thing I was saying, so that when we increase the knowledge loop, it is these experts who I need. A good expert from there should be there to in that advisory board. Services का जो knowledge loop बनाया है, वो बंदा होना चाहिए, not a generalist sitting there who has no knowledge about these things. Knowledge about the whole thing. Yeah, I agree with you completely. Right. और ये सब आएगा, पर आपको टेस्टिंग, ट्रायल्स वगैरह और सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी है। आपके पास सिस्टम ही नहीं है आज के दिन। ये पूरे नए नए आइटम्स जो आ रहे हैं, जो नए टेक्नोलॉजीज हैं, उनका किस तरीके से टेस्ट करोगे? आपके पास लॉन्ग रेंज फायरिंग फैसिलिटी नहीं है, हाई एल्टीट्यूड फायरिंग फैसिलिटी चाहिए आपको, एरोस्पेस टेस्टिंग सेंटर्स चाहिए, प्रूफिंग के लिए चाहिए, ठीक है ना, सब असेंबली टेस्टिंग के लिए चाहिए, कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग चाहिए, वो आपको ट्रेनिंग के लिए चाहिए, आपको सर्विसेज में डेवलपिंग एजेंसीज और प्रोडक्शन एजेंसीज, ये डिफेंस कॉरिडोर्स वगैरह जो हम बना रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। आपका एक्सेप्टेंस आपने बना दिया, उसको फौज के अंदर लाने के लिए टेस्टिंग करने की जरूरत होती है। तो ये बहुत चीजें हैं जो हमारे लिए टेस्टिंग की जरूरत है। अगर हम होलिस्टिकली, राइट, अगर या आई थिंक वी हैव दिस थिंग विल या अगर आप होलिस्टिकली चीज नहीं देखोगे, पूरा विस्तार में नहीं देखोगे, तो हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? Basically, just to highlight and underline again, that sir has just explained the cycle of learning, what was the learning curve in this entire process of making this ramjet projectile. It is a similar learning curve for each and every project that we identify in ICET that we want to do jointly. And knowledge base is the most important. And next, once you have achieved the knowledge base, when you start making it, how are you going to test it? How do you know that it works? आपको टेक्नोलॉजी अगर यूएस से सब कुछ एक प्लेट के ऊपर भी दे देगा, आप अगर उसको हजाम नहीं कर सकते हो, तो नॉलेज को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने बोफर्स जब हमने 84 में लिया था, 100% टेक्नोलॉजी के साथ आया था हमारे पास, उसका पैसा भी दिया हमने। वो टिल 2010, 84 टू 2010, 25 साल, वो जितने टीओटी हमने लिया, it was in one cupboard and it was mothballed and it was moth eaten by the time we started opening for Dhanush. ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी जो है, जो अभी आ रहा है, एक और सुनहरा अवसर है देश के लिए टू दिस थिंग। और मैं आप सब लोग जिसने ये वीडियो देखा, कृपया इसको सब आपके दोस्तों को दीजिए, उनको बोलो अपना 1 घंटा टाइम वेस्ट करके ना ये देख लें एक बार। ये जागरूकता की जरूरत है। बिकॉज इसमें ये पता लगेगा, जैसे सर ने एक बोला था कि हम ट्रेन करते हैं लोग जो बाहर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब जाते हैं। ये एक इट्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू train our people for the benefit of India, not for the benefit of MNCs outside India, so that we can achieve something. And जो हमने डिफेंस के लिए दिया हुआ है, वो बाहर के लिए भी वही लागू है जो दूसरा भी करना चाहते हैं, because this ICET has dual technology, dual use technology. It will work in civil,
It will work in trans civil and military, and it will work in purely military. What we are showing, what we showed you, is the learning of the knowledge base of military. It will be similar in civil, and then you will benefit a lot. That's why I call it transformatory. I'm not talking of it as transformatory, this agreement based on the uniform that I wear. No, as an Indian, I'm It talking. is as an yeah, right. Or ये मैं talking out of experience, right? I've been involved in quite a few deals with the Americans. I've been involved with a lot of research post my retirement, right? And there is no other way but to get technology into this country. It is time we stop talking कि USA will not give us technology. USA is giving you technology on the plate. Whatever technology they are giving, say thank you, take it, and develop knowledge. If you do not develop knowledge, you are zero. You will continue to give engineers and researchers for Microsoft, Amazon, and Google. And And also even believe you NASA, if I me, lied, NASA NASA भी जाते हैं. also, NASA भी जाते हैं. अगर मेरा मानोगे तो आप इसरो का एग्जाम्पल लीजिए. इसरो इज कम्प्लीटली इंडिजिनस, हमारा दिमागों से बनाया है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, रैमजेट जो है 100% हमने इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है. और मेरे को फकर की बात यह है कि और कोई भी देश ऐसे नहीं बना रहा है जो हम बना रहे हैं टेक्नोलॉजी, राइट? ओके, so I think we've covered the whole thing. We'll not take questions